highest common factor. Highest common factor. Right? As the name suggests, it is highest common factor. What is the meaning of highest common factor? Let's say I have two numbers, 24 and 54. If I have to find the highest common factor between these two numbers, what is the meaning of this? Yes, students. How we can find out and what is the meaning of this highest common factor? Beta, whenever we have to find the HCF, there are two methods. You know what are these two methods? Yes. What are these methods? One method is known as prime factorization. And second method is division method. Right? Yes or no? Now, when I do it by the prime factorization, beta, as we used to do in the junior classes, we'll make the factors, prime factors of this. Acha, everyone knows what are prime factors? Any student have any doubt in prime factor? ये तो केस नहीं है ना बेटा, सबको पता है प्राइम फैक्टर क्या होता है. Yes or no? Yes. Right. So we'll make the prime factor of this. Right? So these are the prime factor of 24. And what will be the prime factor of 54? This is clear? Now 24 we can write and 54 we can write. Now when you look at these prime factors, now what are the common factors? 2 and 3. These are the two common factors. Yes. HCF of these two numbers, 6. product of these two common factors. Right? When I say the highest common factor of any two number or any three number or four numbers, the meaning of that is that number can divide the given numbers. Means 6 is the highest number by which we can divide both 24 as well as 54. Is it clear? Yes. So this is a method of prime factorization. Another method is we have division method. How to do it by division method? When you have to do it by the division method, what you have to do? Take the greater number and take it as dividend. Right? Take the greater number as dividend and the smaller number as divisor. Is this clear? Yes. Then जैसे आप बेटा normally division perform करते हैं, you have to do the division. 24 2s are 48. What is the remainder? 6. Is this clear, बच्चों? Yes. Now take this divisor as dividend now. Take this divisor as dividend now and again perform the division. What you will do? 6 4s are. So what is the remainder? 0. When it is fully divisible, right? Whatever is your last divisor, that will be HCF. SCF. Is this clear? Yes. Anything not clear?
Now, if we have to find the LCM, what is LCM? Least common factor. The lowest common multiplier, right? So whenever you have to find the least common multiplier, how you will do? How to find the least common multiplier? We have done the prime factors of these two numbers. Yes. What was the prime factor of 24? 2 into 2 into 2 into 3. And here 2 into 3 into 3 into 3. can we write these in the exponential form? Yes. Right? What is here? This is clear, bacho? Yes. Now, how to find out the LCM? How we can find out the LCM of these two numbers now? Whatever is the highest power of the prime factors, take the product of that. What is the highest power here of 2? 3. 3. And what is the highest power of 3? 3. 3. So this will be the LCM. What it becomes? This will be the least common multiplier. अब बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. When we say HCF, the word we are using highest common factor. Is this clear? But its value is, what was the value of HCF? 6. And what is the value of LCM? 216. This is word is highest, but its value is lower, and the word is least, and the value is Highest. means highest common factor of numbers is lesser or equal. बेटा equal तो हो नहीं सकता, because if the number are the HCF is equal, then number will be same. Yes or no? So that means HCF will be always less than the number or number itself. Suppose we have two numbers. What will be the HCF? What will be the HCF? सिंपल है बच्चे, देख के पता चल रहा है. बताइए जरा जल्दी से मुझे कैलकुलेट कर. हाँ जी बच्चों. Twelve. आ गया. Now, what is SCF? Means SCF is either less than the both the number or both or triple और जितने भी number है बेटा, either less or equal to the smaller number. Is this clear? Yes. Okay, but LCM on the other hand is greater than the all the numbers. Can it be equal also? Yes. Yes. If you take these two numbers, what is their LCM? 24. 24. So means LCM is equal to the greater number, right? And HCF is equal to the smaller number. Yes or no? So now Yes. from here, what we get? If we take the product of these two numbers, 12 into 24, it is also equal to the product of their HCF and LCM. Yes. Yes or no? Yes. So we have this formula.
if we take two numbers, right, and the product of the numbers is also equal to the product of their HCF and LCM. So please note down this formula, right? This formula will be used. There may be some MCQs on this formula. The product of the number is equal to the HCF of the number multiplied by LCM of the number. Is this clear? Is this clear, bachon? Yes. Right. Anything clear, bache? Anything not clear till now? Yes, students. कोई डाउट है तो बताइए जी. चलिए अब हम आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. ये तो हो गया बेटा कॉन्सेप्ट. प्रॉब्लम कहाँ आती है? If we have been given some question, how will you come to know whether you have to calculate SCF or LCM in the question? Can anybody tell me how we come to know कि we have to find SCF or LCM? हाँ जी बच्चे, कैसे पता चलता है? देखिए बेटा, whenever you are attempting the question, read the question carefully, and each and every word is important. Look for some words, especially greatest, smallest, higher, least. These words will tell you what you have to find. Right? मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा, फिर उसके बाद हम चलेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा. In a morning walk, 3 persons steps up together. Their step measures 80 centimeter, 85 centimeter, and 90 centimeter respectively. Right? What is the minimum distance each should walk so that they can complete the distance in complete steps, right? They can complete, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, the distance in complete steps. Right, बच्चों? Have you understood the question? Now please read the questions carefully, each and every word. Then I'll ask some questions. In a morning walk, 3 persons step off together. Their step measures 80 centimeter, 85 centimeter, and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can complete the distance in complete steps?
हाँ जी, read the question. बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? I'll ask some questions on the basis of your understanding. Now, student, have everybody note down this question? Yes. स्टडी कर लिया बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन? Yes. अच्छा, क्या समझ में आया क्वेश्चन? कौन बताएगा बेटा मेरे को? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द सुपरलेटिव्स. वर्ड्स नजर आ रहे हैं? स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम. सो विच वर्ड इज देयर? Minimum. मिनिमम. बस देखो यहाँ पर अगर आपको ये क्लियर हो गया, so your half the problem is simplified. The word is minimum. Minimum stands for LCM. LCM. समझ में आया बच्चों? Yes. बस इतनी सी बात है. अगर आपको ये वर्ड मिल गया ना बेटा और आपने उसको सही से इंटरप्रेट कर लिया तो क्वेश्चन इज डन. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ? LCM. कंफ्यूजन दूर हुआ? Yes. ठीक है ना बेटा? वर्ड ढूंढना है आपको और कुछ नहीं करना है. राइट? अच्छा चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जरा. देखिए बेटा ये 3 पर्सन थे. मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर. ये डिस्टेंस है बेटा. राइट? लेट्स से इसका स्टेप 80 सेंटीमीटर है. दिस स्टेप इज 85 सेंटीमीटर and this step is 90 centimeter. Means ये मैं तीनों के ना डिमार्केशन लगा रहा हूँ. This is a bigger step. Now see what is SCF? It is smaller than the all the three numbers. Yes or no? Yes. This is the size of the step, one step of this person. Is it clear? Can this step be smaller than this? Beta, if you have to find HCF, what HCF says? Ki the HCF of 2 or 3 numbers will be less than the all the 3 numbers, or at the most equal to the least number. समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? Can you make this step smaller than this? Yes or no? नहीं नहीं, क्लियर नहीं है. Is it clear or not बेटा? 3 persons, तीनों के steps different है. One is 80 centimeter, another is 85 और उसके बाद 90. Can 90 वाला जो है वो smaller step करेगा? No. Are you getting my point or not? We have to find कि how much distance they should cover. देखिए बेटा ये यहाँ पे तीनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट पे. तीनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया. Yes. नेक्स्ट तीनों का कहीं पे एक जाके आगे पॉइंट सेम आएगा बेटा. बट वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जहां पे तीनों का पॉइंट सेम आए. यही फाइंड आउट करना है बेटा हमें. Yes. यस और नो? Yes. और थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेता हूं. सपोज यहाँ पे हमारे पास 2, 3 और 4 है. लेट से जो इनका मेजर है ना स्टेप का 2 सेंटीमीटर इंचेस कुछ भी ले लो. हमने नंबर लाइन बना दी बेटा. यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया. ये 2 पे आया इसका फर्स्ट. 4, 6, 8, 12. इज इट क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आया 3, 6, 9, 12. दिस इज क्लियर बच्चों? Yes. यहाँ पे 10 और 12 है. राइट? ये 12 पे यहाँ पे इकट्ठे आया है. इनका दोनों का स्टेप 6 पे और 12 पे इकट्ठा आ गया बेटा. इज इट क्लियर?
Yes. Now this one 4, 8 and 12. तो तीनों का कहाँ पे इकट्ठा आ रहा है बेटा? 12. 12 पे आ रहे हैं ना तीनों अगेन. They have started at initially and then they have the common step at 12. So how much minimum distance they have covered? How much minimum distance they have covered? 12. Yes or no? Yes. देखिए आपके पास एचसीएफ पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं. स्टेप आते हैं, राइट. बेल वाले आते हैं जी, राइट. ठीक है. और कौन से आते हैं जी? ये सारे एलसीएम वाले आ रहे हैं ना. अब एचसीएफ वाले कब आते हैं? जब आपको कुछ मेजर करना हो ना, सेम मेजरिंग सिलेंडर होगा, तो वहां पे आपको एचसीएफ वाले क्वेश्चन आएंगे. सो दिस इज एलसीएम, क्योंकि मोर देन द नंबर्स आ रहा है बेटा. क्लियर हुआ या कंफ्यूजन हुआ? इट इज क्लियर्ड और कंफ्यूज्ड? कंफ्यूजन हुआ है. एम आई राइट? कुछ नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देन विल डिस्कस फर्दर, राइट. राइट. देखिए बेटा, राइट डाउन द क्वेश्चन. आई एम डिक्टेटिंग, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. There is a circular path. There is a circular path around a sports field. Please write down, everyone. There is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes, 18 minutes to drive one round of the field. To drive one round of the field. While Ramesh takes 12 minutes for the same. After how many minutes? After how many minutes? After how many minutes will they meet at the starting point? At the starting point, if they start at same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point if they start at the same time? Sir, please repeat. Yeah, which line? Whole question? Yes. Write down. हाँ जी बच्चों, there is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ramesh takes 12 minutes for the same. After how many minutes will they meet again at the starting point if they start at the same time and they go in the same direction? Is it clear, बच्चे? देखिए बेटा, let's say this is the starting point. This is Priya. This is Ramesh. They have started at the same time and they are going in the same direction from same starting point, right? But we have to find
After how much time they will meet again at the starting point? Starting point पे कब इकट्ठे मिलेंगे बेटा? Yes. Tell me बच्चे. So now what you have to find? Question में आपको word आया कोई बेटा? Is there some word which tells you whether you have to find LCM or SCF? Tell me बच्चों. You are not responding बेटा. Why? Tell me बेटा. क्या doubts आ रहे हैं? क्या clear नहीं है? Especially section B. Nobody is responding. Have you understood the concept or not? Yes. Yes. So बच्चों please tell me what we have to find in this question. LCM or SCF? हाँ जी बेटा. LCM और SCF? LCM सिंपल सी चीज है ना, क्योंकि हमें we have to tell कि after how many minutes they will meet again. So naturally one person is taking 18 minutes, another is taking 12 minutes. So they will meet after more than 18 minutes. So please tell me what will be the LCM of these two numbers. 36. Right? Okay. Now students, any other doubt बेटा? SCF के भी कुछ questions हैं यहाँ पे. Shall we do for SCF also? Yes. Yes. चलिए वो भी कर लेते हैं बेटा. Right. चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा. You have to tell me whether this is a question of LCM or SCF. In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and math are 60, 84, 60, 84, and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants and find the number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject.
हाँ जी बच्चों, please read the question carefully and look for the words and then tell me what we have to find in this question. LCM. LCM. हाँ जी बच्चे, why you have to find LCM in this? Minimum. बेटा देखो, but यहाँ पे ना ये this question is a bit different question, right? पहले मेरे को एक बात बताओ बच्चे, read the question carefully. बेटा मिनिमम आपने देख लिया, वर्ड आ गया मिनिमम, मिनिमम से आपको लगा लिस्ट फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. बट लास्ट लाइन रीड कीजिए जरा. If in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. डिफरेंट है ना ये? Yes. मिनिमम से आपको लिस्ट तो पता चल गया बेटा, एलसीएम, बट द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ एलसीएम. व्हाई? Because when you are sitting the person in each room, what you have to find, what will be the HCF of these three numbers, so that in every room there are same number of participants and each person should be of the same subject. Have you understood question or not जी? Confusion क्या है यहाँ पे? देखिए मिनिमम वर्ड दे दिया आपको, मिनिमम से you are having this impression कि you have to find LCM, but since it's a matter of room, बच्चे अगर आप LCM find out करते हैं, right? So what is the meaning of this? There will be more rooms than the persons, right or not? Yes. So you have to apply some common sense also. The minimum is there, but still you have to find SCF so that you will have the same number of participants in each room. Find out कीजिए बेटा इसका SCF. Twelve. हाँ जी बच्चे, 12 आ गया. Now what will be the answer of this question? Your HCF comes out to be 12, right? What will be the answer for the question? Half part of the question is done now. See, what we have to find? Number of rooms. Now, if in each room there are 12 students, how many students will occupy this Hindi? In how many rooms will be Hindi students? How many rooms will be English and mathematics? So now, how many students will require? Hindi students will require how many rooms? Five. Plus, how many English student will require? Seven. How many maths? Nine. Comes out to be. Got it or not, Ji? Yes. So this question was a bit different question, and you have to understand the question. Ki your question does not end at the HCF. You have to further solve it. Got it, बच्चों? Yes. कोई doubt? No. Right. Shall we move to the next one? This concept is bit clear or not? Yes. Some more question on this, or shall we move to the next topic?
बताइए बेटा। यस, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें बेटा, ठीक है। आई टेक सम असर्शन रीजन ऑन दिस। नाउ assertion is for any two prime numbers E and Q. E and Q, their HCF is 1 and LCM is P plus Q. And reason is for any two natural numbers HCF into LCM is equal to the product of numbers. Yes, bache, please read assertion and reason carefully and then tell me which one is correct and which of the two are correct. And all the four options, you know, A and R are true and A is the correct explanation. A and R are true, but R is not the correct explanation. Third is A is true, but R is false. Fourth is A is false and R is true. Tell me the which option will be there. Sir, A option. A option means both are correct. A and R are true and Both are true. Anjay? Both are true. Yes. A is false. A is false. Are true. R is true. हाँ जी. Question number 11, row number 11, section 10th P. कौन है बेटा, आ जाइए जरा. Please come बेटा. Yes. Better, most of the students are saying assertion is false. Can you tell me why it is false? Sir, LCM is not P plus Q. But it will be P multiplied by Q. very good, beta. Very good. Please sit down. He is absolutely right. When we have two prime numbers, their HCF is 1 and their LCM is the product of the number. Can you give me some example? Let's say it is 2 and 3. What will be the HCF? 1 and LCM 2 into 3, 6. Got it? Yes. Right? And second thing is our formula which is true. So therefore A is false, R is true. कौन सी option होगी बेटा ये? D option. D option. Very good. Next question is the assertion for two odd prime numbers X and Y, where X is not equal to Y. LCM observe the options carefully. हाँ जी बच्चे.
Assertion is for any two odd prime numbers x and y where x is not equal to y. LCM of 2x multiplied by 4y equal to 4xy. And the reason is LCM of x comma y is a multiple of HCF, that is x comma y. Okay. Observe carefully. If you have some confusion, take some example and then solve it. Yes, students, done. देखिए बेटा, if we take the assertion, take any two odd prime, let's say 3 and 7. They are odd prime. Yes. Now, what is 2x means 6 and, is this clear? Yes. Now find their LCM. What will be the LCM of these two? LCM निकालो, hurry up. Guess work नहीं करना बेटा. Whenever we have some doubt, take some example and try to answer the question. Just tell me, बच्चे, what is the LCM of these two numbers? 84. Very good. LCM is 84. Now, does this statement correct? Is this true or not? Acha. What is the LCM of 3 and 20? 3 and 7? 21? Yes. Yes or no? Now, 4 into 21 equal to? So therefore, LCM of 2x and 4y is 4xy. Is it correct? ये true हो गई ना बेटा statement? Yes. Now come to the reason. The reason is correct. Yes. Is it correct? Yes or no? Yes. 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 Is this the correct explanation? No. No. So what will be the answer? B option. The option, right? So this is correct. The LCM is a multiple of HCF. Right or not? Yes. But not the correct explanation of the assertion. Right बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं assertion reason का. For two prime numbers. For two prime numbers x and y, where x is less than y
HCF of xy is equal to x and LCM of xy equal to y. Right? The reason please do this question, Bachchan. Read the question carefully and then try to answer the question. If you have some doubt, take some examples, right? Satisfying the conditions given and then try to answer the question. ये false है बेटा? ये true है false है? Right? For example, when we are taking two prime numbers, can their HCF be equal to the smaller number? No. Let's say we have taken two prime numbers. Let's say 2 and 7. What will be their HCF? 1. So this condition is false. So this is false. Now come to the reason. Is it correct? Yes. Yes. Right? HCF will be always less than or equal to LCM. बेटा equal हो सकता है? It will always be less than. Can it be equal? Students, can HCF and LCM be equal? HCF and LCM be equal? They can be only equal if the number is only one. See, if we take any two numbers, whether they are prime, even, odd, whatever it is. Suppose we take, let's say 2 and 6. What is their HCF? Hanji, what is their HCF? 2. What is their LCM? 12. HCF is 12, LCM is 12. 6. So HCF is 2, LCM is 6. Can it be equal? It will be always less than. It can be only equal if and only both the numbers are same. Right? So both are, in this case, both are false. Is this clear? Actually, this should be always less than. Since if this question is there in the exam, we have to consider this true. Why? Because it is half part is satisfying. It is less than. Is it clear or not? Yes.
Since condition is not given, कि x is not equal to y, so we can assume that it is true. Is it clear? So therefore our option will be D option. Clear? Yes. Just a moment, students. Yeah, students. Let us take one more question. This is an MCQ. If two positive integers P and Q are expressed as are expressed as please do this question, बच्चों. Shall I give you options? चलिए मैं आपको options भी दे देता हूँ. We have done same type of question today. Which option? A option. A भी बोल रहे हैं. Very good, beta. What you have to do? The highest power of both the numbers. What is the highest power of both? What is the highest power of B? That is square. So therefore, A cube B square. What will be their HCF? AB, right? Yes or no? What is the least power? A is 1, B is 1. So therefore, if the question is HCF, then option A is the correct. Now we take one more question. Hanji, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 is
Yes, students, think how we have to do this question. हाँ जी बेटा, क्या करेंगे हम इसमें? Yes, we have to find the least number. The word is, what you will find? LCM. LCM. So you have to find the LCM from number 1 to 10. Please do it. Can you find? Yes. Please do it, bachcho. Okay, you have to find the prime factors of all the numbers from 1 to 10 and then multiply the highest common factors. No talking, bache, no talking. Girl student in section A, third bench and fourth bench. D option. D option. Okay. How many of you have done it? D option कितने लोगों का आ रहा है बेटा? Please raise your hands. एक ही बच्चे ने बोला और हैंड किसी ने भी रेज नहीं किया. जिसने रेज किया वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है. हाँ जी, सेक्शन ए से है, सेक्शन बी से है बेटा. जिस द स्टूडेंट हु हैज आंसर्ड 2520. ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर लिख के उनके प्राइम फैक्टर्स बना देने. 1 का क्या आएगा? राइट. Yes. 5, only 5, 6, then your 7 raised to power 1, 9 and 10. Is this clear, bachcho? Is it clear? Yes. What is the highest power of 2? 3. What is the highest power of 3? 2. 2. 2. What is the highest power of 5? 1. What is the highest power of 7?
So take their product. Understood? What it comes out to be? 8 into 9 into 5 into 7. 40. 63. This comes out to be right, Bacham? Have you understood? Yes. कोई doubt, beta? No. These questions comes quite frequently in the board exams, right? चले बेटा आगे ये नोट कर लिया आप लोगों ने Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा the numbers 525 and 3000 are both divisible only by right so HCF out of 3 5 15 25 and 75 is 75 right okay check whether HCF of is 75 or not. Please do this question. Beta. The number 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. So HCF out of 3, 5, 15, 25 and 75 is 75. Check whether HCF of 525 and 325 is 75 or not. Have you understood the question? Yes. Please check out. Madam.
हाँ जी बच्चों, हुआ नहीं? बताओ ना बेटा कि is it correct or not? Yes, 525 and 3000 both have 75 as their, right? Is this clear? Yes. Now, next question. Can two numbers have 15 as their HCF and 320 as their LCM? Justify your answer. Please do this, bachcho. Are the students done? Students done, beta? ये लंबा क्वेश्चन नहीं था बेटा ये. See, one of the this assertion reason questions. We have done that HCF is a factor of LCM. Have we done or not? Yes or no? देखिए बेटा मैं आपको दिखाता हूँ भाई. Number HCF. हाँ जी. LCM is a multiple of HCF. We have done this. Yes or no? Yes. Now apply that concept here. Is 380 a multiple of 18? 380 is a multiple of 18. Simple करने है ना बेटा. You have to divide 380 by 18, right? Which is not equal a natural number. It is not a natural number. Yes. Therefore, LCM is not a multiple of HCF. Therefore, this information is not correct. Right, beta? Yes or no? Yes. बच्चे 18 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो योर नंबर इज डेसिमल में आ रहा है. Yes. Yes. Therefore, it is not a natural number. Yes. Therefore, this information is not true. Is it clear? Yes. Next question देखिए बेटा. The largest number which divides 17 and 125
leaving remainder 5 and 8 respectively is. Your options are 13, 65, 25, 175. Is this clear, bachcho? The largest number which when divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is. Yes, students. Read this question carefully. What we have to find the largest number. What does this the largest number means? HCF. SC for which two numbers? 70 and 125. But remainder is 5. what is the meaning of this? When you will divide, you take any number x. When you divide any number x, right? Means when you divide 70 by x, the remainder is 5. And when you divide 125 by the same number, remainder is 8. So this is the question. You have to find this x. Have you understood the question? Yes. Now, if I straight away subtract 5 from this, right? What does this mean? X will be a factor of 65. Similarly, here I subtract 8. So X will also be a factor of 170. Is this clear, बच्चों? Yes. क्वेश्चन को ना डिवाइड करके ना स्टेप्स में उसको डीकोड करो बेटा प्रॉपरली. अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अब जब आप ब्रेक कर रहे हो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, सो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Yes. आपको ना डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करना है. इन जूनियर क्लासेस में हम शेप ड्रॉ करते थे ना, व्हेन वी यूज्ड टू कनेक्ट दिस डॉट्स, एक शेप बन जाती थी. तो सेम थिंग हियर, you have different information, you have to connect them. Have you understood the question or not now? How to approach the question, that is important. Got it? Now जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ. Thirteen. इन आ गया ना, बड़ा सिंपल सा था बस. This was the question. अदरवाइज सोचते रहो एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, कैसे निकालना है. नो, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली और उसको फिर सिंप्लीफाई लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश कर. आई होप सम ऑफ द कॉन्सेप्ट माइट हैव बीन क्लियर टुडे. कुछ हुआ है कुछ क्लियर बेटा एचसीएफ एलसीएम या नहीं? Yes. कंफ्यूजन और बढ़ गया? हाँ जी, चलिए अभी विनू मैम आपसे 2 मिनट बात करेंगे. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, राइट? लेट मी कॉल हर. And dear students, good morning. Morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. Okay, that's good. अच्छा, क्लास 10th में आपने साइंस में कहाँ तक कर लिया? क्या कर रहे हो? Light start here. लाइट शुरू किया है? ओके. केमिस्ट्री का आपने वहीं तक ही किया था? Yes. सिर्फ सिंबल्स, वैलेंसेस, फॉर्मूलाज? Yes. कल हम एक काम करेंगे बेटा. हमने, इफ यू टेल मी कि भी जो हमने 9th में किया था, हमने एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की थी कि नहीं, जब आपको 10th का सिलेबस कराया था कि नहीं? No. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. कल हम एक काम करेंगे, मैं आपको अभी भेज दूंगी कि इक्वेशंस लिखिए, वर्ड इक्वेशंस लिखी है. एक तो आपको सिंबल्स पता चल जाएंगे, फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे, वो हम कल काम करेंगे. इज इट राइट?
Yes. फिर आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे ये बताओ, लाइट शुरू किया है, चलिए कल हम केमिस्ट्री का ही करेंगे ताकि वो आपको एक बहुत अच्छी तरह से हो जाए क्लैरिटी से। अब मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव लर्नड द वैलेंसेस, कितने बच्चों ने याद कर ली है जो हमने उस दिन आपको चार्ट दिया था? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। 10th ए में बहुत बच्चों ने कर ली है, वेरी गुड। 10th बी में कितनों ने कर ली है? अभी किसी ने नहीं। चलो, अभी 10th का आपको फील नहीं आया कि हम 10th में आए, अभी आप 9th की तरह बिहेव कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, पर बेटा अच्छा कितनों ने लिख के देखी थी? हाउ मेनी ऑफ 10th ए एक बार दो बार लिख के देखी थी? वेरी गुड, एक बार दो बार कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 10th बी में किसी ने नहीं देखी थी। और 10th बी में आज कितने बच्चे काम में? ठीक है, छुट्टी आ गई थी बीच में, भूल गए मैम, क्या करें, है ना। चलिए, कितने बच्चे आज करेंगे, स्कूल में ही करके जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड। हमने घर के लिए काम ही नहीं छोड़ना, हैंड्स डाउन, है ना। हमने घर के लिए काम नहीं छोड़ना, घर में जाके सोएंगे मस्ती से, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, है ना। ये काम हमने थोड़ा सा करना है, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना शुरू करो, क्योंकि बहुत मोबाइल देखते हो। कितने बच्चे मुझे बताओ 1 घंटे से ज्यादा देखते हैं? वैसे तो 1 घंटा बहुत है, 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है? होगा बेटा, बहुत बच्चों का होगा, बताते नहीं हो आप। तो फेथफुली बताओ, ट्रुथफुली, कितने बच्चे वो गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे, वो चाइनीज सी गेम्स और ये सब? नहीं खेलते? कितने बच्चे उसमें कोई, हाँ ये देखो बच्चे वेरी गुड देखते हैं बेटा, मुझे पता है। कितने बच्चे वेब सीरीज में इंटरेस्टेड है? कौन से देखते हैं वेब सीरीज? चलिए, नहीं देखते, बहुत अच्छी बात, ठीक है, वट एवर। बट अब जो है ना, थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं आपको कहूंगी कि बिल्कुल नहीं देखना, देखो, बट स्पेंड ओनली अबाउट 15 to 20 minutes, मैक्सिमम हाफ एन आवर। ऑल्दो मोबाइल देखने शुरू करो तो पता ही नहीं चलता है कब तक तुम बैठे रहते हो, बट अलार्म लगाओ मोबाइल में कि हमने अब शुरू किया, आधे घंटे बाद हमने खत्म कर देना है, चाहे हमारी चीज कोई बीच में रही है चाहे कुछ है, बस हमने खत्म कर देना है, इसके बाद हमने नहीं देखना। इज इट ओके? विल यू ट्राई टू डू दैट? बेटा देखो, 10th तक कोई मुश्किल नहीं है, 10th तक आप बड़ा इजीली 90-95% थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएंगे, बट उसके बाद आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल शुरू होती है अगर आप अभी सिंसियर नहीं होगे, बिकॉज जब 11th में जाओगे तो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। वहां पे टीचर्स ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिखवाने जैसे 10th तक लिखवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा फर्क करेंगे, है ना, थोड़ा सा आप अपना शेड्यूल चेंज करेंगे। इज इट ओके? थोड़ा थोड़ा सा, है ना, ये नहीं कि भी अच्छा आज मैम ने कहा बस अभी जाके भूल जाएंगे, नहीं। ट्राई कि भी आज हमने दिन में क्या सुना, क्या सोचा, थोड़ा सा हम इस पे क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने शेड्यूल में चेंज? क्या हम एक वॉक के लिए जा सकते हैं? वॉक जरूर करो, आधा घंटा वॉक जरूर करो, इट रिफ्रेशेस योर माइंड, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट जो भी पूजा आपके घर में होती है वो जरूर करो। बेटा मेरे स्टूडेंट्स जो आईआईटी पीएमटी में हुए सब विलेजेस के स्टूडेंट थे, क्योंकि हमारे सेंटर्स ही ऐसी ऐसी जगह है ना, और है भी, ठीक है। एंड दे गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी पीएमटी। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अगर मैं सुबह कहती थी ना कि सुबह आ जाओ 5 बजे पढ़ने, तो वो ये कहते, स्कूल्स में वहां पे अवेलेबिलिटी थी कि 5 बजे 6 बजे भी वो पढ़ने आ जाते थे, जो +1 +2 के बच्चे थे। तो वो कुछ बच्चे ये कहते थे कि नहीं मैम हम गुरुद्वारे जाते हैं सुबह, कुछ ये कहते थे कि मैम हम गुरुद्वारे जाके हमने कीर्तन करना होता है, या मैं तबला बजाता हूँ, ये है। दे वर ऑल स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स। स्पिरिचुअलिटी नो काम्स योर माइंड, है ना, कट्टरबाजी नहीं, बट स्पिरिचुअल होना चाहिए, भगवान में ईश्वर में जो भी है उसमें विश्वास सभी का है, थोड़ा थोड़ा उसका नाम लो ताकि हमारे में एक कामनेस आए, अग्रेशन खत्म हो, ठीक है। when you connect with the person, when you connect with the god, it prevents you always from doing wrong things, ठीक है। गलत करने से हमेशा हमें रोकता है, और जो लोग गलत करते हैं अगर वो ये सोचे ना कि वो रिलीजियस पर्सन है
वो रिलीजियस है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल है ही नहीं, वो भगवान ईश्वर अल्लाह किसी को भी नहीं मानते। दिस इज फैक्ट, बिकॉज गॉड डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग थिंग्स। वो हमें बताता है कि ये चीज गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे कनेक्ट हो ताकि आप में शांति, कामनेस आए, अग्रेशन ना आए, दिमाग को आपको कंसंट्रेट करने की आदत पड़े। when you concentrate, when you study, by concentration you will do the things in half time। अगर कोई चीज आपको 1 घंटे लग रहा है, वो आप आधे घंटे में कर लो, ठीक है। एक अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है आपने, जिसके लिए वॉक करनी है, थोड़ा सा 10 मिनट पूजा पाठ के लिए जरूर निकालो, चाहे मॉर्निंग में चाहे आफ्टरनून में, जरूर करो। और जब भी पढ़ने बैठो तो फोन दूर कर, फोन बिल्कुल अपने मम्मा पापा को दे दो कि ये फोन मेरे पास ना आए। मेरी कोई सहेली का, मेरे दोस्त का फोन आए तो कुछ नहीं, उसको कहो कि हमें मैसेज कर दो, हम बाद में अटेंड कर लेंगे। इज इट ओके? देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी रहेगी, कितने डिसिप्लिन रहेगी। और अब मुझे ये बताओ कि जो भी सर ने आज मैथ का करवाया वो आपको समझ में आया बेटा? अब इस चैप्टर में से वट एवर ही हैज डन, मुझे नहीं पता अभी तक क्या करवाया, बट वो चीज सारी क्लियर हो गई आपको? अब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस गलत तो नहीं होंगे? बेटा ये चीज मैंने ना, मुझे पहले नहीं पता था कि 10th में भी एचसीएफ एलसीएम है। मैं किसी स्कूल में गई, वहां बच्चों को यही ना पता चले कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, राइट? ठीक है, तो हम जो है आपको एक वर्कशीट देंगे जिसमें जो वो आप खुद ट्राई करना। इज इट ओके? ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट मैं देती हूँ, जहां तक भी सर ने करवाया है, ठीक है। तो हम जो है वो वर्कशीट देंगे, वो खुद ट्राई करो, देखिए कितना समझ आया। अब एटलीस्ट आपको ये पता चल गया भी कहाँ पे एचसीएफ निकालना है, कहाँ पे एलसीएम निकालना है बच्चों? है जो उसकी थ्योरम है एचसीएफ एलसीएम की, वो हो गई। चलिए, आज जो भी क्वेश्चन सर ने कराया वो आप कर पा रहे थे? 10th बी, आर यू एबल टू क्वेश्चंस? चलिए, हम एक असाइनमेंट दें या टेस्ट दे दें, बताओ क्या दोगे? टेस्ट की असाइनमेंट करते हो टेस्ट से? ठीक है, चलो एक असाइनमेंट दे देंगे और फिर सैटरडे को टेस्ट ले ले। ठीक है, चलिए। और कल जो है, आज शालू मैम से, वैसे शालू मैम खुद ही दे देंगी, बट उनसे साइंस की वर्कशीट लेके जाना। कल हम वो इक्वेशंस वाला पार्ट कर लेंगे ताकि वहां पे वैलेंसी फॉर्मूलाज ये आपको सबको पता हो। इज इट ओके? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।